Hello friends, welcome to Manu Law Classes. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. Now today we are going to discuss the important news from the Hindu edition of 22nd March 2023. Now friends, कल मैंने आपको एक बहुत ही important बात बताई थी कि that March equinox जो था वो 21st March को था. Equinox मैंने आपको बताया भी था कि when the length of day and night are equal. Today is also a very important day, that is 22nd March. ठीक है. Now 22nd March we celebrate it as World Water Day. ठीक है. This is a very important day, World Water Day. We celebrate it on 22nd March. ठीक है. So questions come. So that's why you should know कि वर्ल्ड वाटर डे हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं. खास करके अगर आप देखेंगे तो इन्वायरमेंट रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, हमारा इंटरनेशनल डेज हो गया या कोई ट्रीटी हो गई, जैसे कि मान लीजिए कि यूनियन बजट में एक प्रपोजल है जो आउटलाइन किया गया है, मिस्टी फॉर द कल्टीवेशन ऑफ मैनग्रोव इन सॉल्ट पैन एरिया. Okay, so this types of initiatives announced in union budget, or for example if you can look loss and damage fund which was announced at COP27. So these things become very important from the exam point of view. So please take a note that 22nd March it is celebrated as World Water Day. Now यहाँ पे 2023 का जो theme है, it is focusing on solutions, active solutions for water and sanitation. Because if you will see Sustainable Development Goal 6 which aims for water and sanitation for all, ठीक है, तो ये हमको अचीव करना है 2030 तक, water and sanitation for all. But still in the world there are 2 billion people who do not have access to safe and potable water. So we have to work very fast. We have to generate innovative solution that everybody has access to safe and potable water as well as to sanitation also. Okay, now moving ahead. तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट पेज पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है वो श्रीलंका से है. नाउ दैट IMF क्लियर्स $3 बिलियन बेल आउट फॉर श्रीलंका. तो जैसा कि हम जानते हैं कि श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस जो है हम पिछले अराउंड डेढ़ साल से पढ़ रहे हैं. हमने ये भी देखा था कि अप्रैल 2022 में श्रीलंका ने, मतलब आज से लगभग 11 महीना पहले, श्रीलंका है डिक्लेयर्ड अ डिफॉल्ट ऑफ $51 बिलियन. ओके, $51 बिलियन का प्री एम्प्टिव डिफॉल्ट था. प्री एम्प्टिव डिफॉल्ट का मतलब कि डिफॉल्ट होने से पहले ही ये डेब्ट डिफॉल्ट डिक्लेयर कर दिया गया. Now what is the meaning of declaring this preemptive default? It means that Sri Lanka had stopped paying the debt, जिसको कहते हैं डेप्ट सर्विसिंग. जो भी डेप्ट था जो उसे पे करना था उसने उस पर डिफॉल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया कि ताकि अब वो नहीं कर पाएगा डेप्ट सर्विसिंग. फाइन. उसके बाद इट स्टार्टेड डिस्कशन विद IMF to get loan under extended fund facility EEF. यहाँ पे ये बात चलने लगी. तो इसमें एक कंडीशन IMF ने यही रखा था कि that it has to get assurances from the major lenders of Sri Lanka, that are India, Japan and Sri Lanka, to access the fund. So India became the first country to give assurance to IMF for Sri Lanka, followed by Japan and then China, and after that International Monetary Fund has cleared a $3 billion extended fund facility for Sri Lanka. Okay, so इसके objectives देख लो. EEF के क्या हैं? Program are to restore macroeconomic stability, then debt sustainability, safeguarding the financial stability, and structural reforms. These are the 4 important agenda which this fund will look upon. Also this fund, अब ये जैसे ही ये $3 बिलियन बेल आउट पैकेज श्रीलंका को मिलेगा, सो देयर विल बी फंड्स फ्लोइंग फ्रॉम अदर कंट्रीज आल्सो टू हेल्प श्रीलंका. ओके, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट इशू हाईलाइट किया गया है दैट इज ऑफ करप्शन. सो करप्शन, सो एन IMF गवर्नेंस डायग्नोस्टिक मिशन हैज स्टार्टेड असेसिंग श्रीलंका's गवर्नेंस एंड एंटी करप्शन फ्रेमवर्क इन इट्स फर्स्ट सच एक्सरसाइज इन एशिया. देन द लोन कम्स अ ईयर आफ्टर श्रीलंका डेब्ट डिफॉल्टेड ऑन इट्स फॉरेन डेब्ट. ठीक है, जैसा कि जो मैंने आपको ये $51 बिलियन का बताया हुआ है. कमिंग टू दिस न्यूज दैट सुप्रीम कोर्ट बेंच सीक्स डेटा ऑन अल्टरनेटिव्स टू हैंगिंग. तो इफ यू विल सी सेक्शन 354(5) of the Code of Criminal Procedure, it mandates that a person sentenced to death shall be hanged by the neck till the person is dead. तो यहाँ पे एक पेटिशन फाइल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में बाय ऋषि मल्होत्रा, who is challenging the constitutionality of death by hanging as a mode of execution. Now the petition seeks more human,
quick and decent alternative. So he had termed hanging as cruel and barbarous compared to lethal injection used in United States. But now you have Justice Narasimha, who has noted that there was literature to suggest that hanging is closest to painless. Now the bench, headed by Chief Justice D.Y. Chandrachud and Justice P.S. Narasimha, so they have proposed to set up an expert committee to relook India's method of putting to death its criminals. कि एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाया जाए. It will comprises of experts. जो experts होंगे इसमें वो होंगे national law universities, professors of law, doctors and scientific persons, and they will be examining this based on data, okay, based on which we can the Supreme Court can go for more humane method of execution. Now one liner. The central government has stopped the funds invoking Section 27 of MNREG Act for alleged widespread corruption in the implementation of scheme since December 2021. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो इस साल के लिए वेस्ट बंगाल का जो फंड था अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम विच इज ओके एंड अदर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, तो मनरेगा का जो फंड है ओके, so it has been stopped under Section 27 based on alleged widespread corruption in the implementation of the scheme. The next is 6.6 magnitude earthquake in Afghanistan rocks Delhi. तो यहाँ पे कल रात को earthquake आया था जिसका मैग्नीट्यूड था 6.6 and it was centered in Afghanistan. ये जो हम लोग यहाँ पे कहते हैं centered, इसका मतलब it is called as earthquake's epicenter. ठीक है, we call it as earthquake epicenter. एपीसेंटर क्या होता है? एपीसेंटर इज द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ओके, फ्रॉम वेयर द अर्थक्वेक वेव ट्रेवल्स. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो ये अर्थक्वेक आया था ये हिंदू कुश रीजन में आया था एंड इट्स ट्रेमर्स वर फेल्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान. अब नॉर्मली जो हिंदू कुश में जो अर्थक्वेक आता है वो डीप अर्थक्वेक होता है, डीप फोकस अर्थक्वेक. डीप फोकस अर्थक्वेक का मतलब कि फोकस मतलब exactly a point below the surface of the earth from where the waves have started traveling or a point where the energy has been released. और फोकस का जो perpendicular point on the surface of the earth होता है उसको हम एपीसेंटर कहते हैं. For example, suppose this is the focus, okay, from where the waves have been generated or from where the energy has been released. So if we project this point on the surface of the earth, we call this point as epicenter. Now coming to China-led framework. तो यहाँ पे जो है we are discussing about an initiative of China which is called as Global Security Initiative. तो कभी कभी एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव किस कंट्री का इनिशिएटिव है, तो आपका आंसर होगा चाइना. ठीक है, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव. तो इफ यू विल सी ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, इट हैज़ 5 मेजर पिलर्स, दैट इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट, openness and inclusion, multilateralism, mutual benefit and holistic approach. अब यहाँ पे इन 5 पॉइंट को लेके चाइना का जो ऑब्जेक्टिव है या जो बिहेवियर है वो पूरा डिस्कस किया गया है. सो इफ यू विल जस्ट सी ओवर हियर दैट अगर हम GSI का फर्स्ट प्रिंसिपल लेते हैं दैट इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट. So it is based on the need for countries to adhere to United Nations Charter and international law while facilitating international relations based on mutual trust and respect for each other's sensitivity. But अगर आप देखेंगे China has constantly demonstrated the exact opposite in terms of its relation with neighbor. जैसे कि China continues to ensure that its relation with New Delhi are proactive, okay, and it disregards confidence building measures and bilateral agreements. And it also undermines territorial integrity and sovereignty of India. The same China's maneuvers in South China Sea, it has led to maritime dispute with many neighboring countries of China in the sea. Then it rejects the international law, particularly the United Nations Convention on the Law of Sea, and China continues to intrude and block the access of its neighbor within their respective exclusive economic zone. अब जो सेकेंड प्रिंसिपल है ओपननेस एंड इंक्लूजन का, ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे that China continues to engage in exclusionary policies in East and South China Sea. Then the third principle is multilateralism. The third principle, so it focuses on bilateral and multilateral security cooperation and consultation to address issue of concern with the party involved. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो चाइना
Okay, it uses its asymmetric power relations, and it has constrained the members of Association of Southeast Asian Nations from pursuing collective action against Beijing's assertion. Then second, China continues to delay the establishment of critical code of conduct for South China Sea as it continues to bolster its military power. ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि चाइना ने जो प्रिंसिपल आउटलाइन किया है, चाइना का बिहेवियर विद इट्स नेबर्स टोटली मतलब इट इज ऑपोजिट. जो फोर्थ प्रिंसिपल है विच हाईलाइट्स म्यूचुअल बेनिफिट. ओके, इट मीन्स पॉजिटिव सम कोऑपरेशन. गॉट इट. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि चाइना का एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेते हैं फॉर एन एग्जांपल. बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग श्रीलंका, पाकिस्तान, कि जो उनका आज का जो डेप्ट प्रॉब्लम है, तो यहाँ इनका जो क्रक्स है समवेयर इट इज रिलेटेड टू दिस चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. फाइन. सो इफ यू विल जस्ट सी दैट given the significant infrastructural deficit in the developing world, it is its disregard for international macroeconomic stability by funding unsustainable projects for countries with low or non-existing credit ratings that creates more debt burdens for this country. इसका मतलब जो डेप्ट फाइनेंसिंग तरीका है चाइना का, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, वो कंट्री का एग्जिस्टिंग क्रेडिट रेटिंग्स नहीं देता, उनको सीधा लोन देता है एंड देन इट बर्डन्स अप देम विद डेप्ट. तो अगर आप देखेंगे दैट China insisted on receiving larger share in its bid for a joint exploration of resources with Manila in Philippine waters. अब हम आते हैं होलिस्टिक अप्रोच पे, जो लास्ट प्रिंसिपल है इस ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव का. होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स with an equal emphasis on eliminating any breeding ground for insecurity. अब आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे, rather than being holistic, China's engagement with these powers indicate a more narrowly defined goal for its power interest. It means we are talking about competition with US and India basically. So China, it continues to be a catalyst for insecurity in the non-traditional security realm like maritime security, cyber security, okay, and COVID-19 pandemic, arming the terror groups in Myanmar. तो यहाँ पे ऑथर क्या बोलना चाहता है? ऑथर कहना चाहता है कि जो चाइना का GSI है, इट इज फार फ्रॉम बीइंग सस्टेनेबल, इक्विटेबल एंड ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन टू द ग्रोइंग इनसिक्योरिटी दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग. Now coming to India-Japan relations, so Fumio Kishida, the Japanese Prime Minister, he was on visit to India. So he has highlighted first thing which he has highlighted is growing congruence between G7 and G20. तो इस साल जो है G20 का जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास है और G7 की प्रेसिडेंसी जो है वो जापान के पास है. जापान ने इंडिया को एज अ स्पेशल इनवाइटी भी बुलाया है इन G7 समिट विच विल बी हेल्ड इन हिरोशिमा इन जापान. The second thing is $75 billion plan for free and open Indo-Pacific. Okay, so here in this plan it will work with countries in the region and avoid debt traps while building infrastructure and enhancing maritime and air security. The second is about Russia-Ukraine crisis. So here Mr. Kishida is understood to have been straightforward about the need for India as G20 president to come on board with G7 plan to address the Ukraine issue and call out the Russian aggression. जैसा कि आप जानते हैं कि अर्लियर जब SCO समिट हुआ था तो वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था दैट इट इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर. ठीक है, एंड इंडिया स्ट्रेस्ड ऑन डिप्लोमेटिक रिजोल्यूशन ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस, बट India has not joined the Western sanctions against Russia. India has continued to buy crude oil from Russia. Okay, so now Japanese Prime Minister, he wants that now India should come on board with G7 plan. Okay, the next is the two sides, they have collaborations which includes bullet train project from Mumbai to Ahmedabad and infrastructure project to link Bangladesh and India's northeast. Some of the common goals which these two countries have are promoting global south, okay, then stop of Russia-Ukraine war. Now coming to the text, understanding waste to energy plants. तो waste to energy plants जो होते हैं वो प्लांट दे यूज नॉन रिसाइक्लेबल ड्राई वेस्ट. ध्यान से देखना, दे डू नॉट यूज ऑल टाइप ऑफ वेस्ट, दे डू नॉट यूज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दे यूज नॉन रिसाइक्लेबल ड्राई वेस्ट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ इट्स हाई कैलोरिफिक वैल्यू. ओके, तो यहाँ पे जो कोजी कोड में जो हम देख रहे हैं कि जो एक प्रॉब्लम चल रहा है
वेस्ट का, तो वेस्ट टू एनर्जी पावर प्रोजेक्ट कैन बी वन ऑफ द सॉल्यूशन फॉर डीलिंग विद मैसिव हीप ऑफ गार्बेजेस। अब अगर हम सॉलिड वेस्ट प्रोफाइल देखें अगर इंडिया का, तो इट कंसिस्ट ऑफ 55 to 60% बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट which can be converted into organic compost or biogas. Then 25 to 30% these are non-biodegradable dry waste and 15% are silt, stones and drain waste. अब ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल ड्राई वेस्ट है, ओके, इट कंसिस्टेड ऑफ 2 to 3%, और इसमें क्या क्या आता है, हार्ड प्लास्टिक, मेटल्स एंड ई वेस्ट। नाउ ओनली दिस वेस्ट आर रिसाइकलेबल, ठीक है। उसके बाद जो बाकी के वेस्ट हैं लाइक लो ग्रेड प्लास्टिक, रैग्स और क्लोथ्स, दे कैन नॉट बी रिसाइकल। सो दिस इज द प्रॉब्लम। नाउ इफ यू विल सी दैट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स जो हैं दे कैन बी सॉल्यूशंस, बट देयर आर सर्टेन चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या है, दैट फर्स्ट दे हैव वेरी लो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड वेस्ट इन इंडिया ड्यू टू इनप्रॉपर सेग्रीगेशन। हम अपने वेस्ट को सेग्रीगेट नहीं करते ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट में, तो उसके वजह से जो कैलोरीफिक वैल्यू है वेस्ट का, it is 1500 किलो कैलोरी पर ग्राम, which is not suitable for power generation. If we compare this with coal, तो कोल का कैलोरीफिक वैल्यू है 8000 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ वेस्ट। अगर हम सेग्रीगेट अगर करें तो ये कैलोरीफिक वैल्यू हमारा बढ़ जाता है। तो इफ यू विल सी द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सेग्रीगेटेड एंड ड्राई नॉन रिसाइक्लेबल ड्राई वेस्ट, सो इट इज मच हायर, ऑलमोस्ट डबल, दैट इज 2800 to 3000 किलो कैलोरी पर केजी। नाउ दिस मच इज सफिशिएंट टू जनरेट पावर। इसका मतलब कि if we want to make this waste to energy project successful, segregation of waste is very important. But now comes the second challenge. The second challenge is high cost of energy production. जो पर यूनिट कॉस्ट होगा एनर्जी प्रोडक्शन का, तो वो वेस्ट का जो होगा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का, इट इज ₹7 to 8 पर यूनिट। बट द इलेक्ट्रिसिटी विच वी आर गेटिंग फ्रॉम कोल, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर पावर प्लांट, इट इज अराउंड 3 to 4 per unit. The third challenge is waste to energy projects can consume only non-recyclable dry waste, which is about 25% of the waste. तो एक सोर्स भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। The next is the SARS-CoV-2 XBB.1.16 lineage a cause for concern? So we are talking about XBB.1.6। ये एक वेरिएंट है, ठीक है। अब ये वेरिएंट कौन से उसका है, it is a variant of Omicron, it is itself a variant of concern. So now if you will see that it is a recombinant variant. Recombinant variant का मतलब जब दो lineage मिलके कोई तीसरा टाइप का lineage जब बना लेते हैं, okay, we call it as recombinant lineage. So several recombinant lineage of SARS-CoV-2 have emerged during the course of COVID-19 pandemic. अगर हम XBB की बात करें तो it is a recombinant of two Omicron sublineage. One is BA.2.10.1 and BA.2.75. अगर हम XBF की बात करें तो it is a recombinant of BA.5.2.3 and BA.2.75.3. ओके, अगर हम बात करें XBB.1.5 का तो it is a sublineage of XBB which was first identified in New York City in October 2022 and it is currently a variant of interest, not a variant of concern. Okay, अभी जो XBB.1.16 है, it is a recombinant lineage of virus and is a descendant of XBB lineage. So it has been a predominant lineage in India. Okay, और उसका जो जीनोम सीक्वेंसिंग फ्रॉम इंडिया में भी पाया गया है, यूएस में भी पाया गया है और सिंगापुर में भी पाया गया है। So अभी तक जो वेरिएंट है XBB.1.16 ये टोटल 14 कंट्रीज में पाया गया है। नाउ इसके जो म्यूटेशंस हैं, इट हैज़ नंबर ऑफ म्यूटेशंस विच आर इन कॉमन विद XBB.1.5. So but there are certain additional key mutations which make it to escape the immune. ये कुछ जो एडिशनल जो म्यूटेशंस हैं, इसमें से जो स्पाइक प्रोटीन में जो म्यूटेशन है, इट इज E180V T478R एंड 15T इन ORF9B. अब देखिए जो XBB.1.5 है, इट हैज म्यूटेशन T478K इन स्पाइक एंड T478R जो होता है, जो XBB.1.5 या .1.16 में है, इट इज एसोसिएटेड विद इम्यून SK. नाउ इंडिया में अगर हम देखें तो इस वक्त दो चैलेंजेस एक साथ आ गए हैं दैट कैन बी चैलेंज फॉर इंडिया। एक तो है XBB.1.16 और दूसरा है H3N2 फ्लू वायरस। ओके, सो दो चैलेंजेस एक साथ देखा जा रहा है। सो दैट्स वाई
The cases are rising despite the low number of testing. The total number of active COVID-19 cases हैं, it has increased to over 6,000 and XBB.1.16 it is spreading very fast. अगर कुछ स्टेट्स जहाँ पे ये फैल रहे हैं अगर आप देखेंगे तो स्टेट ऑफ तेलंगाना, कर्नाटका, गुजरात एंड महाराष्ट्र दे हैव रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ XBB.1.16 cases. The next is anti-submarine warship INS Androth launch. So the INS Androth, second in a series of 8 anti-submarine warfare shallow water craft, was launched in Kolkata and was built by Garden Reach shipbuilders and engineers. अब यहाँ पे आप प्राइमरी रोल देखेंगे INS Androth का, so to conduct anti-submarine operations in coastal waters, low intensity maritime operations and mine laying operations. Also, they are capable of full-scale subsurface surveillance of coastal waters and surface platforms and coordinated ASW operations with aircraft. The next is news from USA. US President Joe Biden will announce that he is designating 2 wilderness area in Nevada and Texas as national monument. Okay, so यहाँ पे बस आप नाम देख लीजिए. Okay, from environment that 2 wilderness area in Nevada and Texas now they will be declared as national monument in USA. Then Japanese Prime Minister, after visiting India, he has visited to Ukraine for the first time since the start of the war. He has visited Bucha, a town near Kyiv, where Russian forces were accused of committing widespread atrocities. The next is Xi Jinping hails great neighboring powers vows to strengthen ties with Russia. So Xi Jinping, while the Japanese Prime Minister was on visit to South Korea, then India and now Ukraine. So in the meantime, Xi Jinping has visited Russia. And he has called that his talk with Vladimir Putin was meaningful and frank, and Moscow has said that it has been largely cut out of European markets because of sanctions and it would be able to meet China's growing demand for energy. Neither did they make any mention on Ukraine. अब ये जो न्यूज़ है ये बहुत important है, especially from India point of view or from the world point of view. Now you can see over here the shift of Russia towards China. ठीक है, fine. Already you must have read that Russia, China and Iran, they have announced a naval exercise called as Security Bond 2023. Okay, where other countries will also participate. तो यहाँ पे आपको एक एनर्जी का एंगल दिख रहा होगा कि चाइना जो है अपने एनर्जी बेस को संभालने के लिए इट इज टॉकिंग विद सऊदी अरेबिया, ईरान एंड इवन रशिया. But over here now if you will see that Russia is now moving towards China. Okay, fine. So यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है कि चाइना का ऑलरेडी कन्फ्रंटेशन है यूएस के साथ इंडो पैसिफिक में. तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि एक चाइना का भी फ्रंट बन रहा है यूएस के अगेंस्ट इन इंडो पैसिफिक. ठीक है, अगर आप देखेंगे रशिया, तो अगर आप रशिया के एशियन साइड में आओगे तो रशिया इज ऑल्सो यू कैन से अ मेजर कंट्री इन इंडो पैसिफिक रीजन. ओके, सो दिस कैन बी अ वरीसम अलायंस. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि एक तो सऊदी अरेबिया और ईरान, ठीक है, अंडर द मेडिएशन ऑफ चाइना दे हैव कम क्लोजर. नाउ ईरान इज ऑलरेडी क्लोज टू रशिया एंड चाइना बाय बिकमिंग द मेंबर ऑफ Shanghai Cooperation Organization, and now Russia is now more dependent on China because now it has been shut out from the European markets. The next is news from economics related to startup. तो इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं कि जिनका ऑपरेशन इंडिया में है बट दे आर डोमिसाइल्ड अब्रॉड. नाउ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी IFSCA, नाउ इट हैज सेट अप एन एक्सपर्ट कमिटी हेडेड बाय फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर G. Padmanabhan to suggest ways to bring this startup back to India and to relocate them in Gift City in Gujarat. ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इंडिया इट हैज़ द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम विद 115 यूनिकॉर्न्स. यूनिकॉर्न्स क्या होता है? जो वो फर्म्स जिनकी जो वैल्यूएशन है इट इज मोर देन $1 billion. Okay, so here the effort of the committee will be to recognize the regulatory, tax, legal and other perspectives related to startups and help them to move to Gift City. Okay, now the second mandate of this committee will be, this panel would be to commend measures, to suggest measures for the development of international innovation hub at Gift City. Okay, Gift City IFSC, International Finance Services Center, IFSC. Okay,
So that's all for today, friends. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.